रजिस्ट्रेशन कर दियो। देवव्रत रजिस्ट्रेशन कर दियो। देवव्रत वॉइस क्लियर होची? देवव्रत सर मु रजिस्ट्रेशन टा करछु ठीक है। So good evening to all. So आज आम प्रोसीड करिबा MRD-102 MRD-102 poverty alleviation programs a retrospect. This block focuses on the poverty alleviation programs. MRD-102 101 आमे विभिन्न कथा डिस्कशन कले। So 102 covers the ideas thought on poverty alleviation programs, a retrospect. रजिस्ट्रेशन सब कर दियो। रजिस्ट्रेशन जो मैंने आछो रजिस्ट्रेशन कर दियो। So the topic covers poverty alleviation programs. India, the word as we coined so far today, after independence, India is a developing country and where maximum people living below the poverty line. As in the post-independent era, during the post-independent era, India has achieved commendable success on many fronts. अनेक सक्सेस हेची देशरे after the departure of the Britishers from our country since 1947 and after the implementation of the first 5-year plan during 1951 under Pandit Jawaharlal Nehru, who was our first Prime Minister. A commendable achievement so far held for the country developmental work in 3 sectors, covering in 3 sectors: primary sectors, secondary sectors, and service sectors. Now, in the case of agriculture being imported at one time, we are now not only net exporters but also one of the largest donors of food in the world. In the field of science and technology, भारत रे आमे ए पर्यंत सुधा अनेक समय रे विभिन्न खाद्य एवं कृषिजात द्रव्य विदेश को रप्तानी करुथिले मध्य लाइक कॉटन, जूट प्रोडक्ट, sugar cane and like टी, कॉफी, मेडिसिन्स विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट आमे ए पर्यंत विदेश को रप्तानी करूछु and food item also supply करूछु, but sometimes we are in a crisis and importing the food grains from other countries. Hence, as we are on the frontier of many areas like space communication and information technology, India is so advanced nowadays in comparison with other countries of the world also.
IT sector India बहुत develop करी no doubt, and our learners, our intellectual abilities are in abroad, and they are spreading their knowledge all over the world in information technology sectors. So rural development in India is identified largely with poverty alleviation policies. Rural development in India is identified largely on poverty alleviation policies. Perhaps no country in the world has invested so much time and resources on poverty eradication or poverty alleviation. India investing huge and spending huge amount of resources, capital resources, how to alleviate the poverty from the rural areas. କାରଣ କାହିଁକି ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ rural and urban ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ poverty ଅଛନ୍ତି no doubt, but less in comparison with the rural area. Hence, in this context, government of India spending huge capital resources to eradicate the poverty and unemployment from our country during different 5-year plan periods, preparing budgeting and spending huge resources, capital resources on different heads. That district rural development through financial resources spending, district rural development agency, DRDA, so that the rural development program we can taken into account for building future prosperity. It is obvious that the problem of poverty in India is a major challenge so far today, and it needs priority in our development policy. If we want to improve the nation and also compete with the developed nations, it can be seen that India lives in villages. भारत सेही गाँव अवस्थित. India lives in villages, and the development of the nation cannot be achieved without the development of the villages. आमे कहबा भारत कोठी na eastern part of this world, but we can say all the citizens, individual citizens can say India always lives in villages. This was the viewpoint of our father, nation's fathers, Mahatma Gandhi. Once upon a time, that he was told that India lives in villages, and the development of the nation cannot be achieved without the development of the village. भारत क्या कहवा ना गाँव देश भारत. भारत हूँ ग्राम बहुल देशटी, तेणु गाँव विकास एकांत अपरिहार्य. गाँव विकास हेले देशर मध्य विकास हम. If individual concern per capita income will increase, that will have a very good impact to hike the national income of the country. The real fruits of independence and democracy in fact cannot be enjoyed by the people unless they are needy and freed from the clutches of poverty. जदि आमे poverty eradication न करि परिवा ताहाले स्वाधीनतार भारत जो स्वाधीनता हासिल करिछि तार स्वाद आमे पाई परिवा नाही. जदि आमे ए दारिद्र्य बेकारी हटै परिवा नाही देशरु, ताले स्वाधीनतार स्वादटा आमे चाखि परिवा नाही. तेणु आज इंडिया लिव्स इन villages, we should develop the village. And in this context, this process did achieve result in countries where industries and the service sector developed faster and overlooked the agricultural waste. Economics. Bharat Vartaman giving priority on the IT sectors and industrial development, but overlooking the agricultural sectors. आमे कहउछन्ती एपटरे
भारत होची गाँव अवस्थित इंडिया लिव्स इन villages if we given priority on industrial sectors so that we cannot grow our economy. India is always a labor surplus country but capital deficiency country. Labor surplus, capital deficiency. Due to shortage of capital, how can we utilize the surplus labor in our country? भारत आमे जानिचंती जे श्रम बहुल राष्ट्र किंतु पुंजी अभाव देशटी बट अमेरिका होची पुंजी बहुल बा कैपिटल सरप्लस कंट्री बट लेबर डेफिशिएंसी कंट्री अमेरिका होची पुंजी पुंजी संपन्न देशटी किंतु श्रमर अभाव देखा जाए सेठारे so human capital resources plays one of the important role for the country's economic growth and development. Qualitative human population is inevitable for the country's economic development. गुणात्मक मानव संबल आमर पई एकांत अपरिहार्य. Hence, in country like India, it did not work due to various reasons. The development cannot be possible so far today, and it reflects the various reasons that India continue to be an agrarian economy. ए पर्यंत सुधा आमे जानि थिबा दरकार जे जो देश कृषि क्षेत्ररु बा एग्रीकल्चरल सेक्टर ऊपर जिते डिपेंडेंट थाए से देश सेते पुअर अटे जो देश जिते कृषि क्षेत्र ऊपर निर्भर करी थाए से देश मध्य पुअर अटे जो देश इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर ऊपर बेसी डिपेंडेंट ही थाए बा स्प्रेड ही थाए ग्रोथ रिच कंट्री so India obviously that one continues as an agrarian economy. Agrarian economy means that specifically the country's people depends on agricultural sector. जो देशर लोक माने कृषि क्षेत्र ऊपर विशेष करी निर्भर करी थांती ताहाकू agrarian economy कहा जाए बा कृषि भित्तिक अर्थनीति बोली कहा जाए कारण आम देश होची भारत जोठी कृषक मानक संख्या अधिका था so maximum as less than 1/4 of the GDP is added from the agricultural sector. Gross domestic product our जो GDP अच्छी gross domestic product are 1/4 from the agricultural sector. Nearly 80% of the farmers have small and marginal farmers less than 2 hectares of land. 80% आम देश रे ए पर्यंत कृषक माने अछंती जो माने की स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग फार्मर्स क्षुद्र चाषी नाम मात्र चाषी आम देश रे ए पर्यंत 80% लोक अछन चाषी माने ए हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लो लेवल ऑफ लिटरेसी आर अदर इंपोर्टेंट फैक्टर्स व्हिच हैव एडवर्सली अफेक्टेड द डेवलपमेंटल प्रोसेस. विकास पथरे आमर लो लिटरेसी लेवल क्वांटिटेटिव लिटरेसी बढ़ुची बट क्वालिटेटिव बढ़ू नाही. देयर आर डिफरेंट रीजंस. सो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि ये सब होची मुख्य कारण जहा पई डेवलपमेंट आम देश रे संभव होई पारु नाही. एंड that slow pace of development in industry and service sector that also one of the hurdles. धीरे धीरे जो शिल्प क्षेत्र हो बा सेवा क्षेत्र हो सर्विस सेक्टर हो आम देश रे आगोउछि स्लो एंड स्टेडी. एंड देन मोरओवर if there was any trickle down effect it remained confined to the urban areas only. जति कि हमर डेवलपमेंट होछि प्राय विशेष करी फोकस करा जाउछि अर्बन एरिया को गां गुडी को सब इग्नोर करा जाउछि. So that is why in this context the government must focus on the rural development. So poverty alleviation program, what are the different approach to poverty alleviation program in India? आम देश रे poverty eradication alleviation program पाई
कौन सब व्यवस्था करा जाइछि। अच्छा आउरी बहुत पिला टिके रजिस्ट्रेशन कर दियो प्लीज। मात्र 8 जन करिसेंती। मेसेज बॉक्स जो मझी रे अछि मेसेज बॉक्स को जाइकिरी सेठी क्लिक करिकिरी निजर ना हो बा रजिस्ट्रेशन नंबर सेठी ऐड करो। एटा रेकर्ड रहउछि परा रेकर्ड रहउछि केते पिला अटेंड करूछंती। जो माने अटेंड करूछन तांका पई पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम द रीजनल सेंटर साइड या रीजनल ऑफिस साइड भुवनेश्वर रीजनल ऑफिस साइड एही पिला रेगुलर क्लास अटेंड करूछंती बोली रेकर्ड भुक्त होउछि तेनु रजिस्ट्रेशन कर दियो। हेंस नाउ अप्रोच टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन सब अप्रोच करा जाइछि आफ्टर इंडिपेंडेंस। So employment generation and poverty alleviation are dependent on one on another, increase in employment and determinant for the reduction in poverty. दारिद्र्य दारिद्र्य कहा पर डिपेंड करछि ना एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर। जदि बेकारी हेले ताले दारिद्र्य बढ़िला। दारिद्र्य बढ़िले कोन हबो ना इनकम कमिला पर कैपिटा इनकम कमिला। जदि पर कैपिटा इनकम कमिला so that national income will also decline. So there are different poverty alleviation program. The rural poor can be divided into mainly 3 categories. Those with land. Rural poor जो माने गाँ गंडा अंचल रे बसवास करूचंती तांकु आमे 3 कैटेगरी विभाग करि परिबा। Those with land जो मानकर किछि किछि लैंड अछि। Those with skills जो मानकर स्किल अछि कुशली कारीगर जो माने सब आउ किछि अछंती दोज विदाउट लैंड एंड स्किल गाँ गंडा अंचल आउ किछि लोक अछंती जो मानकर किछि चाष जमी नाही कि कुशलता नाही बा दक्षता नाही एफिशिएंसी नाही। सो 3 कैटेगरी आमे रूरल एरिया रे आमे पाई परिबा। कोन दोज विथ लैंड किछि कृषक अछंती बा रूरल पुअर अछंती किछि किछि तांकर चाष जमी अछि। आउ किछि अछंती दोज विथ स्किल्स किछि कुशलता अछि से माने कि स्किल वर्कर बा स्किल लेबर लाइक मासून बा जो माने सब गृह निर्माण करि थांती बुणाकार कलाकार आर्टिसंस वीवर्स मासून्स बार्बर्स बा जो माने बढ़ई कुंभार these are the categories of people are belongs to the skilled workers or skilled people. So ये कैटेगरी अछंती आउ किछि अछंती दोज विदाउट लैंड एंड स्किल। अनेक लोक अछंती तांकर लैंड नाही कि गरीब श्रेणीर लोक किबा स्किल नाही। ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ रूरल डेवलपमेंट द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज वन ऑफ द होलिस्टिक प्रोग्राम गोटा सीडीपी प्रोग्राम आरंभ करा जायतिला हम देश रे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो दिस वाज नॉट सो spread all over the country. A holistic approach to develop agriculture, infrastructure and basic facilities in the villages. ये जो CDP program, community development program जोड़ा हमारा initiation करा जायतिला first period during 1970 60 to 70 अडको agriculture, infrastructure development, basic facility in the village यार ऊपर सब फोकस करा जायतिला। There were many reasons for this situation that why the program was not so success. Modern farming being cost intensive. आधुनिक चाष पद्धति हमर बहुत माने cost intensive थिला खर्च बहुल थिला। The small and marginal farmers could not adopt modern farm and technology due to lack of credit facilities and thus remained poor. ए जो मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम एप्लीकेशन करा गला देश सारा सेतबळे गरीब चासी मान पाखरे अर्थ नथिला कि किछि नथिला तो अडॉप्ट करि पर नथले। सो ग्रीन रिवोल्यूशन ड्यूरिंग 1966 ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमर इंप्लीमेंट करा गला सारा देश रे ग्रीन रिवोल्यूशन वाज कन्फाइंड टू एग्रो क्लाइमेटिकली रिच एरियाज व्हाइल द अदर रीजन्स रिमेन बैकवर्ड। जो ग्रीन रिवोल्यूशन ड्यूरिंग 1966 रे हम देश रे प्रचलन करा जायतिला सबुज विप्लव जेहेतु यह कॉस्ट अधिका थिला एग्रो क्लाइमेटिकली
रिच एरिया रे यार प्रयोग बेसी देखा गला विशेष करी पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मध्य संपात सो रिच एरिया मानकरे तार एप्लीकेशन भलो भाबे स्प्रेड हेतला किंतु अन्य पार्ट रे इंडिया रो भारत रो अन्य पार्ट रे आर प्रभाव विशेष करी पड़िला नाही hence intensive farming did not increase the observation of laborers जो सरप्लस लेबर आम देश अच्छे बिकज इंडिया इज सरप्लस कंट्री ये जो इंटेंसिव कल्टिवेशन करा गला तादरे लेबर माने एनगेज पाई परले नाही कारण मॉडर्न टेक्निकल फार्मिंग सिस्टम रे एप्लीकेशन करा जायतला सो एक्सटेंसिव कल्टिवेशन होइतले लेबर अब्जॉर्प्शन हेई पारि थांता देयर वाज नो अप्रिशिएबल ग्रोथ इन द नॉन फार्म सेक्टर absorb surplus labor. There was no attempt of upgrading skill and artisans. Upgradation करिबा पई skill artisan मानको कोनोसी सुजोग दिया जाई नथिला. So poverty obviously will continue. एई सब समस्या नेगरी आम देश रे ए पर्यंत सुधा poverty लागि रही. To provide relief to the rural poor who mainly dependent on daily wages. A crass employment program was introduced during 1974 and 75. Daily employment, daily wage काम धंदा पाई एक क्रास एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1974-75 मसिया बेले प्रचलन करा जायथला हम देश रे इंप्लीमेंट करा जायथला ता द्वारा किछि लोक माने इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट फॉलोड बाय अनदर वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कॉल्ड पायलट इंटेंसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम PIREP तापरे मध्य एटा गोटा प्रचलन करा जायथला तापरे प्रचलन करथला IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम was introduced during 2000 was introduced during 1980 and about introduced in 2000 blocks initially with a provision to bring 300 blocks under the program every year 300 ब्लॉक को प्रति वर्ष ए प्रोग्राम रे अंतर्भुक्त करिबा पई आईआरडीपी प्रोग्राम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एंड दैट विल लिंक टू द ब्लॉक एरिया एंड ब्लॉक विल ऑटोमेटिकली लिंक्ड टू द विलेज एरिया सो आईआरडीपी प्रोग्राम मध्य प्रचलन करा जायतला तापर आउरी गोटे प्रोग्राम प्रचलन कराला नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP and extended to all the blocks of the country देशर प्रत्येक ब्लॉक मानकु एटा एक्सटेंड संप्रसारित करा जायथिला सो आउरी प्रोग्राम सब थिला ट्राइजिम प्रोग्राम ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ताको जाय ट्राइजिम प्रोग्राम आउरी डकरा प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया डकरा प्रोग्राम एगडा सब आम देशर सब रूरल पॉवर्टी एलिवेशन पई ये सब प्रोग्राम सब प्रचलन करा जायथिला तेणु देश रे विभिन्न प्रकार स्कीम SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये मध्य प्रचलन करा जायथिला तेणु आ भितरे सेते तार इंपैक्ट कोनोसीटा 100% इंपैक्ट पड़ी पारला नाही जा फल रे ये पर्यंत सुधा पॉवर्टी आम देश रे अछि सो पॉवर्टी आमे मुख्यतः दुई प्रकार पॉवर्टी आमे पाइबा गोटे होची हमर कोन एब्सोल्यूट poverty and that is relative poverty absolute मन रखिथिबे एगडाक what is poverty line what are the types of poverty को माने पुअर आरि पर विशेष करी पॉइंट गोडा पर ध्यान दबो परीक्षा खाता रे लेखि बसु पिला माने so in this context we concluded here poverty कौन so poverty line poverty what is poverty line what are the types of poverty when people are unfed we can title as the poverty so that here the government of India determined one poverty line गोटा दारिद्र्य गोटा सीमा रेखा मध्य निर्धारण करिसंती मो गत क्लास रे काउंसलिंग पॉइंट रे मो एक कथा डिस्कशन करिथिली पॉवर्टी लाइन दारिद्र्यर सीमा रेखा ताले दारिद्र्यर सीमा रेखा गोटा लाइन
जो माने तळे रहिले से माने हेले बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कैटेगरी तंको आगला जो माने एबो पॉवर्टी लाइन रहिले से माने पॉवर्टी राउ रहिले नाही से माने sound in economically they are in sound so above poverty line they are belongs to above poverty line so poverty line मु सेदिन कहिथली जे our planning commission determined और ना जोटा हम कहउछ नीति आयोग सो प्लानिंग कमिशन कहिथिले जे दैनिक जने व्यक्ति दुई भाग रे विभक्तकरण करथिले जे रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया पीपुल रूरल एरिया लोकों पई कोन दरकार अर्बन एरिया लोकों पई कोन दरकार कारण रूरल एरिया लोक माने अधिक लेबरियस देन दी अर्बन पीपुल सो दैट इज व्हाई न्यूट्रिशन इनटेक अनुसारे फूड न्यूट्रिशन अनुसारे दारिद्र्य सीमा रेखा निर्धारण करा जायतिला सो कोन दरकार जने व्यक्ति पई 2400 कैलोरी न्यूट्रिशन पर डे पर पर्सन फॉर रूरल पीपुल is required. For urban people, 2100 calorie nutrition vitamin required per day per person. Those people unable to get 2100 calorie nutrition in rural area and 2400 calorie nutrition in urban area, unable to get, they are below, residing below the poverty line. दुईटा कथा सब मन रखिबो 2100 कैलोरी न्यूट्रिशन गाँ गंडा लोक मानक पई दरकार पड़ी थाए 2400 कैलोरी सहरांचल लोक मानक पई दरकार पड़ी जदि दिन को जने व्यक्ति एथिक न पाइला ताले दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी हला सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ताले को माने पॉवर्टी हु आर द पीपल पुअर हमें जस्ट आलोचना करिथल ऑलरेडी कर साइले द स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर्स the farmers having no land, skill, ability, the categories of people like the masons, जो माने हमर घर निर्माण करि थांती बा कारपेंटर जो माने स्किल्ड वर्कर्स आ तापरे बार्बर्स एई कैटेगरी लोक मान सब होचंती आर्टिसans weavers these category people who are belongs to treated as the poorer sections in our country so that absolute poverty and relative poverty दुई प्रकार मुख्यतः पॉवर्टी की हमें दुई प्रकार भाव रे विभक्तिकरण करबा डिवाइड करबा एब्सोल्यूट ओडिया रे कहा जाए अतिरिक्त बा चरम दारिद्र्य अवस्था अतिरिक्त दारिद्र्य बा चरम दारिद्र्य जो माने कि जंत्रणा निराश सो पॉवर्टी इज ए सिचुएशन ऑफ ग्रीफ डिस्पेयर एंड पेन दारिद्र्य होची गोटे नैराश्य हताश जंत्रणादायक अवस्था पॉवर्टी इज ए सिचुएशन ऑफ ग्रीफ डिस्पेयर एंड पेन मन रखिते बेटा दारिद्र्य होची गोटे नैराश्य हताश जंत्रणादायक अवस्था जने दारिद्र्य लोकों को आमे रास्ता घाट रे देखुचंती गरीब लोक जो माने भिक्षावृत्ति करूचंती सेही अवस्था रे हमकु निजको कंपेयर करिवा आमे कौन फील करिवा नैराश्य हताश जंत्रणा रे छटपट हवा छडा आउ किछि नै सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी अतिरिक्त बा चरम दारिद्र्य अवस्था ओ माने को कुहा जिवो दोज पीपल अनेबल टू गेट फूड क्लॉथिंग शेल्टर टू लिव इन दिस यूनिवर्स एई इनवर्स ए आर्थ रे बंचिबा पई हेले पृथ्वी पृष्ठ रे बंचिबा पई हेले जने लोक जदि खाद्य वस्त्र बासगृह न पाई थाए ताकू कुहा जाए चरम दारिद्र्य अवस्था बा एब्सोल्यूट पॉवर्टी सो रिलेटिव पॉवर्टी ओडिया रे कुहा जाए ताकू आपेक्षिक दारिद्र्यता कहा कुहा जिवो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर सेक्शंस that means income and wealth disparities is refers to relative poverty. Relative poverty defined as if there will be a vast gap between wealth and income among the people in a country, we can say it is titled as the relative poverty.
ताको कुहाजिबो रिलेटिव पॉवर्टी रिलेटिव रो ओडिया होची अपेक्षिक दारिद्रता आय संपदर मध्यरे एक बड़ धरणर पार्थक्य को कहा जाए रिलेटिव पॉवर्टी बा अपेक्षिक दारिद्र्य सो वर्तमान मु गोटे क्वेश्चन पचारिबी के मन रखिलो के नाही मु देखबा टेस्ट करबा गोटे सो अभिलिप्सा नायक टिके कहिलो रिलेटिव पॉवर्टी का कहा जाए सर रिलेटिव पॉवर्टी ला जो माने अपेक्षिक पॉवर्टी जोटा कि हम आय एवं संपत्ति भीतर जो गैप टा सेटा कह दे द वेल्थ एंड बड़ धरणर इनकम बड़ धरणर पार्थक्य को हला ताकू कुहा जीवो रिलेटिव पॉवर्टी the gap between rich wealth and income among the people is titled as the relative poverty so अच्छा आउ की अछि रजत पात्र कहिलो सर रजत पात्र एब्सोल्यूट पॉवर्टी हाउ कैन सॉरी सर टिके क्लास में नतली अच्छा सब ठीक है ओके देवव्रत कुआडे पळेला ओके अमीर को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी अमीर हेलो वॉइस क्लियर हो कि अंकित कुमार महांती क्लियर हो अंकित ना खाली मोबाइल थोई दी के पड़ी हां को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी So absolute poverty means the gap between wealth and ओडियर को मनुष्यर आय एवं तार संपत्ति मध्यरे थिबा गैप रिलेटिव टिको पॉवर्टी ना सेटा हला रिलेटिव पॉवर्टी द गैप बिटवीन इनकम एंड वेल्थ इज vast so that is relative poverty को आजिवो so absolute poverty means when people unable to get food clothing shelter in order to live in this earth बुझि पल्ला आज्ञा आज्ञा जेतेबेले लोक माने बंचिबा पई अति आवश्यक द्रव्य आमे बंचिबा पई कोन अति आवश्यक द्रव्य दरकार फैन दरकार कि लाइट दरकार खाद्य वस्त्र बासगृह ए तीनटा जेतेबेले आमे न पाइबा एको चरम दारिद्र्य अवस्था को हारिबो चरम बा उत्कट दारिद्र्य को हाजिबो बा अतिरिक्त दारिद्र्य को हाजिबो जा ताले आमे देखिबा एठी अमेरिका गोटे रिच कंट्री भारत होची गोटे विकासशील विकास पथरे आगे चलची बा डेवलपिंग कंट्री कहबा ताले अमेरिका रे कोउ टाइप रो दारिद्र्य देखा जाए भारत रे कोउ टाइप रो दारिद्र्य देखा जानती तुलना करिबा कंपेयर करिबा with a rich country with a developed country and with a developing country अमेरिका हला गोटे डेवलप्ड कंट्री विकसित राष्ट्र भारत होची विकासशील राष्ट्र अमेरिका रे केवल देखा जाए रिलेटिव पॉवर्टी सेठी एभलिया बेगार नाहंती जो माने खाद्य वस्त्र बासगृह एभली दे चरम दारिद्र्य अवस्था देखा जाय नथा अमेरिका रे but there is gap between income and wealth among the people in USA जेतक rich country in Australia German France Italy United Kingdom केवल relative poverty से देश मानक देखा जाए but in India Pakistan Bangladesh Myanmar Sri Lanka ए सब देश मानक रे absolute poverty चरम दारिद्र्य अवस्था अछि अनेक लोक अछंती दिन को खाद्य वस्त्र बासगृह पाई न थांती बंचिबा पाई सो इन दिस कंटेक्स्ट वी आर सेइंग that poverty is a situation of
grief, despair and fear. मने कल आमे जदि दिने गोटे दिन खाद्य वस्त्र बासगृह न पाइबा बाहर बुलिबा कौन लागिबो हमकु फील कर निजे निजे सब. So poverty is a broader sense as merely concerned with the food, cloth and shelter. And in this context, it is also related to living conditions directly impact the quality of life. Thus, economic and human development are two sides of the same coin. Economics and human development are the two sides of the coin. To realize this objective, various programs, efforts were made beginning with the first 5-year plan. प्रथम 5-year पंचवार्षिक योजना ठारू आम देश रे दारिद्र्य दूरीकरण पई सरकार अनेक चेष्टा चालू रखिछंती. प्लान योजना माध्यम रे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम हमर जोटा अछि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम मीटिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए फैमिली फॉर प्राइवेट कंजम्पशन फूड शेल्टर क्लोथिंग. So access to essential services such as drinking water, sanitation, public transport, health and education items of social consumptions. एगरा सब दरकार होउछ. The assumption was that economic growth of people would be able to improve their social consumption. They would be able to make use of various social services like better housing, health care, drinking water, sanitation, education, communication, etc. एगड़ा सब मिनिमम नीड उपरे प्रोग्राम उपरे हमर जाउछ. तेणु सरकार आ प्रति मध्य सब ध्यान दउछन किभଳି मिनिमम अति जरूरी आवश्यक पदार्थ बा द्रव्य गुड़िक लोक मान पई दरकार स्वास्थ्य खाद्य वस्त्र बासगृह एवं ट्रांसपोर्ट गमनागमन ए सबु सरकार ध्यान देउछन. So components of minimum need program MNP रो कौन सब component सब अछि. Provision of facility universalization of elementary education up to 14 years. शिक्षा को सार्वजनीन करबा पई मागणा शिक्षा दवा पई 14 वर्ष पर्यंत आम संविधान रे लेखा अछि. यह गोटे मिनिमम नीड आम देशर पिला मानक पई संविधान रे लेखा अछि. आमे जानि छ इंडिया इज ए welfare country. Part IV of the Indian Constitution states directive principle of state policy. राष्ट्र निर्देशावली नियम जोटा अछि चतुर्थ स्तंभ रे संविधान रो जे भारत होछि गोटे जनमंगल राष्ट्र. जनमंगल केते बळ हेबो ना देश रे दारिद्र्य दूरीकरण हेइथिबो. 14 वर्ष पर्यंत समस्त मागणा रे शिक्षा पाउथिबे. गुणात्मक शिक्षा प्रकाश होउथिबो. गुणात्मक शिक्षा दिया जाउथिबो एवं देश मध्य रे धनी दरिद्र तारतम्य नथिबो. इकोनॉमिकली सोशियली पॉलिटिकली सबु क्षेत्र रे समस्तंकर समान थिबा दरकार अर्थनैतिक दृष्टिकोण रु. किंतु ए पर्यंत parallel economic situation conditions not prevail so far today. So that is why India is under now maximum people living below the poverty line. So adult education to improve literacy among the person of the age of 15 years. Development of rural public health facilities also given priority in this MNP program by minimum needs program. Supply of drinking water problem of villagers suffering from chronic scarcity of safe source of water. Provision of all weather roads to all the villages. To some extent, all weather roads price spread करी गलानी. जो प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अनुसार प्रोग्राम अनुसार प्राय गाँ गंडा अंचल रे सीमेंटिंग रोड सब पक्का रोड सब करी दिया गलानी. एटा गोटा अचीवमेंट हेइछ. Provision of housing developed home in cities, sites, in village areas. Environmental improvement in slum areas. Slum area रे environment improvement करा जिवो. Rural electrification करा जिवो. Electrification to some extent also developed in our country so far today. तो एई भଳି सब विभिन्न प्रकार प्रोग्राम सरकार हाथ को नौचंदी गाँ गंडार
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पाई एवं अर्थनैतिक मानदंड दृढ़ करबा पाई इत्यादि। सो तथापि ए पर्यंत the only obstacles hurdles for these regions that is the population explosion जन विस्फोरण मुख्य कारण जो ये सब संभव हो। तो गोटे प्रोग्राम थिला हमर IRDP प्रोग्राम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम देश रे जोटा चालू थिला जे IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रो मुख्य सब कोन ता सब मेन फीचर्स ऑफ IRDP रे प्रोग्राम रे कोन थिला। For the first time the concept of poverty line income was applied for the identifications of the beneficiaries and therefore land was no more the criteria for the identification and selection of the beneficiary। IRDP integrated rural development program केवल लैंड को नेगिरी आधरे IRDP प्रोग्राम रे लोक मान को सिलेक्ट करा जाय नथला। लोक मान को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आ पर मध्य फोकस करा जायथिला। सो पॉवर्टी लाइन मध्य फोकस करा जायथिला। बीपीएल कैटेगरी लोक माने एई IRDP प्रोग्राम रे बीपीएल कैटेगरी लोक मान को धार्य करा जाउथिला। ताको सब विभिन्न प्रकार सरकारी फी रेशन मध्य प्रदान करा जाउथिला एई IRDP प्रोग्राम माध्यम रे। The identification of beneficiaries was done through the baseline of survey। सर्वे करा जायगिरी डोर टू डोर सर्वे करा जायगिरी आइडेंटिफिकेशन करा जाउथिला IRDP प्रोग्राम माध्यम रे। So at least 30% of total beneficiaries were supposed to be the SC scheduled caste category लोक एवं scheduled tribe category लोक। This was later increased 50%। 50% जो माने आइडेंटिफिकेशन हेले 50% को धरा गला बिलो पॉवर्टी लाइन। So at least 30% women beneficiaries from all categories were supposed to 33% and which was later increased to 40%। women category मध्य integrated IRDP प्रोग्राम रे सुजोग दिया गला एमान को सब मध्य। The self employment project would cover all the different areas program for agricultural development including efficient utilization of land and water resources with the help of technology। जो माने IRDP स्कीम रे आसुथिले सेमान को सब SC ST बा जनरल कैटेगरी बा वुमेन कैटेगरी जो मान को हमें आइडेंटिफाई करले सर्वे अनुसार डोर टू डोर सर्वे करा जाय सेमान को विभिन्न प्रकार अपॉर्चुनिटी मध्य IRDP प्रोग्राम रे प्रदान करा जाउतला। कोन प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। चाष जमीर प्रॉपर यूटिलाइजेशन किभली करा जाय परिबो ए कैटेगरी लोक मान को सरकार विभिन्न प्रकार ऋण मध्य प्रदान करूथिले वाटर रिसोर्सेस मध्य सप्लाई करूथिले। सो IRDP प्रोग्राम also cover animal husbandry as a subsidiary occupation directly mainly to the small peasant and agricultural labor household। क्षुद्र चाषी एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड मानकू एई IRDP प्रोग्राम माध्यम रे अलाइड एक्टिविटी जा कुआ जाय सहायक कृषि। मेन कृषि हला हमर के ना हमर चाषबास काम। अलाइड एक्टिविटी कहले हमर एई गाई गोरु छेली मेंढा कुकुड़ा बतक एवं एगडा सब पालन करिवा। एई अलाइड एक्टिविटीज रे अलाइड चाषबास रे हमर वर्ष तमाम गोटे परिवार रोजगार क्षम होई पारि थाए। कारण चाष पर निर्भर कले चाषटी कोन हुए मनसून ऊपर डिपेंड करि थाए। जदि भलो मौसम हैला चाषी माने बेनिफिट पाइबे, भलो मौसम न हले चाषी माने गला चाषी आत्महत्या सब बेले देखा। किंतु आजिकाली हम माने सब देखुचंती मौसम वायु परिवेश प्रदूषण हेतु मौसम वायुर गोटा स्वाभाविक अवस्था नाही। मैक्सिमम टाइम रे मरुड़ी पड़ी जाउची, ड्रॉट हो जाउची, चाषी माने फेल्युअर हो जाउछन, चाषी आत्महत्या बढ़ुची। तो सरकार यदि मोटिवेशन इंस्पिरेशन चाषी मान को देबे ताहले निश्चित भाव रे से माने थ्रू आउट ईयर अर्न करि परिबे। सो मोटिवेशन इज वन ऑफ द पावर मस्ट बी मेंटेन एंड गिवन टू द farmers
motivation ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ କହିଥିଲି perhaps motivation is press the right button and we can get the desired action so that motivation will become successful. Press the right button, get the desired action and the motivation, we can get the motivation and the dream will fulfill automatically. So program of marine fisheries and including harvesting of natural resources through dollars, mechanized boats and country boats. जो माने कि मेराइन काम सामुद्रिक मत्स्य चाष करुथिबे सेमानक सब बोट अन्यान्य सुविधा सुजोग मध्य सरकार आईआरडीपी प्रोग्राम माध्यम रे जोगाण करुथिले तापरे प्रोग्राम ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री आईआरडीपी माध्यम रे मध्य सोशल फॉरेस्ट्री गुडिक ऊपर गुरुत्व दिया जाउथला गां गंडार लोक माने जंगल निज गां पाख जंगल को सुरक्षा करिवे एवं ताकू सुरक्षा कले सरकार तरफ विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग लोक मानक दिया जाउथला नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ फार्म फॉरेस्ट्री थ्रू स्मॉल पीजेंट हाउसहोल्ड या पर मध्य गुरुत्व दिया जाउथला विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हैंडलूम सेरिकल्चर एक्वाकल्चर बी कीपिंग गोट फार्मिंग एमानक ऊपर मध्य सरकार ए जो विलेज कॉटेज इंडस्ट्री मध्य ऊपर आईआरडीपी स्कीम रे मध्य सुजोग दिया जाउथला टू आर्टिसान क्लास ऑफ द रूरल पॉपुलेशन मानक मध्य सुजोग दिया जाउथला सो सर्विस सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर पुअर फैमिलीज एमानक मध्य स्कोप दिया जाउथला सो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मध्य ए जो प्रोग्राम रूरल हमर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन आधार सब सेटिंग सेटअप होइतिले आईआरडीपी प्रोग्राम रे मुख्यतः भूमिका ग्रहण करथिले डीआरडीए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी थ्रू लिंकेज विथ ब्लॉक वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सहित डीआरडीए लिंक करिकि विलेज पंचायत वाइज आईआरडीपी स्कीम गुडिक सब प्रचलन करा जाउथला आधार सब विभिन्न प्रोग्राम सब थिला कोन सबडा प्रोग्राम डीपीएपी डॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट काडा कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी काडा प्रोग्राम ता कुआ जाए से बळा सब अन्य विभिन्न प्रकार प्रोग्राम सब सरकार हाथ को नैथिले ए जो आईआरडी स्कीम माध्यम रे एगुडी को सब अंतर्भुक्त हेउथला अच्छा प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटेशन कोन सब थिला आइडेंटिफिकेशन केमिति एगडा सब इंप्लीमेंट हबो गां गंडा अंचल रे ना बेनिफिशियरी मानकु प्रथमे आइडेंटिफिकेशन करा दिबो सेकेंडली द पॉवर्टी लाइन इनकम पॉवर्टी लाइन को प्रथमे निर्धार्य करबा पे पड़िबो को माने पॉवर्टी लाइन ने अछंती तांकर इनकम स्टेटस आमे देखले पॉवर्टी लाइन ने को माने ना 2100 कैलोरी पाउ नथिबे गां गंडाळ अंचल लोक माने शहरांचल लोक माने 2400 कैलोरी पाउ नथिबे तल तांकर इनकम प्राय तो बिल्कुल नथिबो 3000 4000 टका भीतर एनुअली थिबो इनकम सो हाउ कैन दे विल बी फीड 2100 calorie per day per person it is impossible so first of all determine the bpl category people identification of beneficiaries so tapare kon hotla initially the video block development officer kon kari used to select the beneficiaries out of approved and a priority list and after the approval of DRDA the same was used to assisting the beneficiaries video गांगा बोली सब सर्वे करी बाहरी करिवे VLW माध्यम रे विलेज लेवल वर्कर जो मान सब अछंती VLW एमान सब आइडेंटिफाई करिवे ता भीतर तो तुम सब जानिछ एक्जेक्टली प्रकृतर जो माने बीपीएल कैटेगरी लोक तादरु पड़े बाहरी जाइथिबे खाली दी रूलिंग पार्टी पीपल मैक्सिमम तादरे पसी जाइथिबे दे आर बिलोंग्स टू बीपीएल कैटेगरी से माने बेनिफिट जहा पाउछंती हम सब जहा देखुछंती विभिन्न संवाद सरहा माध्यम रे सब तो हम जानि छंती अब कोन कहबा पाठ जहा होची हम ताकू फोकस करबा पे पड़िबो सो डीआरडीए गोटे वीडियो लिंक करिवे टू विलेज पंचायत लेवल so the IRDP scheme will progress automatically the approved list is displayed in the village panchayat गां गंडा पंचायत रे एगडा सु लिस्ट गुडी को झुलिबो पंचायत ऑफिस रे जे ई माने सब आईआरडीपी स्कीम रे अंतर्भुक्त हेले एमानकू एई सुविधा सब दिया जिवो सो वेरियस प्रोजेक्ट्स विभिन्न प्रकार स्किल्ड अनस्किल्ड
एबिलिटी एप्टीट्यूड फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज मध्य तांको सब जोगे दिया जिवो ए जो कैटेगरी आईआरडीपी स्कीम रे जो मान सब अंतर्भुक्त हेले सो एनी एक्टिविटी हैविंग a favorable incremental capital output ratio may be taken up in the primary secondary and tertiary sectors so हमें जानि चंती तीनटा सेक्टर गोटे जे कोनसी देशर अर्थनीति मुख्यतः तीनटा सेक्टर ऊपर बेस करूची हम आगुरु डिस्कशन करथिले दैट इज प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर मध्य कहबा सो प्राइमरी सेक्टर मुख्यतः हमर को आ जाउची जोगडाक that is agriculture animal husbandry and fisheries like forestry mining एई पांचटा मुख्यतः इंक्लूड हुए प्राइमरी सेक्टर पृथ्वी रे जे कोनसी देशर अर्थनीति तीनोटी सेक्टर मन रखथिबो दैट इज प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर थर्ड होची टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर सो प्राथमिक क्षेत्रता काहे की कहआ जाउची why we are title it is primary sector because the society gets or fulfill their primary wants from the primary sector समाज कहले मनुष्य समाज को बुझौची सब आमे मनुष्य समाज आमर जो प्राथमिक अभाव कोन खाद्य वस्त्र बासगृह ए तीनोटी आमे ए प्राथमिक क्षेत्र रु पाई थाउ कोठ पाई थाउ कृषि जोड़ा चाषबास फॉरेस्ट्री जंगल विभाग रु तापर आमे पाई थाउ फिशरी मत्स्य चाष करी खाद्य पाई थाउ तापर आमे आउ कोन पाई थाउ कोठो एनिमल हस्बैंडरी पशुपालन कले आमे खाद्य एवं घर करण सामग्री पाई थाउ घर निर्माण पाई आमे फॉरेस्ट रु पाई थाउ माइंस रु आमे कच्चा माल पाई थाउ सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द प्राइमरी सेक्टर आमे जोथारु प्राथमिक अभाव को पूर्ण करि थाउ सो सेकेंडरी सेक्टर होची कोन ना इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट बैंकिंग एगरा सब होची हमर इंडस्ट्री विशेष प्राय द इंपोर्टेंस दैट इज गिवन इंपोर्टेंस ऑन इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्टर सो सेवा आउ गोटे रहला हमर सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर आमे कोन आमे पाई थाउ कंफर्ट्स एंड लग्जरियस गुड्स कमोडिटीज जो सेकेंडरी बा दैत्य क्षेत्र रु आमे हमर मनुष्यर द्वितीय अभाव परिपूर्ण करि थाउ लाइक फैन एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर टेलीविजन मोटर व्हीकल्स जत्ते इलेक्ट्रिकल गुड्स कमोडिटीज इत्यादि व्हीकल्स इत्यादि आमे सब सेकेंडरी हमर आराम विलास सामग्री अभाव को परिपूर्ण करि थाउ सो थर्ड होची सर्विस सेक्टर जोटा कि सेवा क्षेत्र हम पाई था कोठी बैंक ट्रांसपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर जुडिशियरी एंड लाइक पुलिस डिपार्टमेंट एमान सब सेवा जोगै थांती तणु आमे पैरेलल हिसाब रे ए तीनोटी क्षेत्र रे आमे ग्रोथ बा डेवलपमेंट करिबा उचित ताहाले देश रु अनेकांश रे पॉवर्टी दूर होई परिबो अच्छा विशेष करी आम देश रे वर्तमान देखा जाउची जे सेकेंडरी एंड दैट इज सर्विस सेक्टर ए दीटा क्षेत्र ग्रो होउची इंडस्ट्रियल सेक्टर एवं सेवा क्षेत्र विशेष करी देखा जाउची आईटी सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट वर्तमान ग्रोइंग इन आवर कंट्री सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट आल्सो गिविंग प्रायोरिटी ऑन दिस सर्विस सेक्टर सो सर्विस सेक्टर रे अनेक ऑब्जर्व होई थांती विभिन्न जॉब क्षेत्र रे सो आउ सेही भली प्रोग्राम अछि सब ट्राइजिम प्रोग्राम तमर ए यूनिट रे अछि ब्लॉक रे ट्राइजिम प्रोग्राम द रूरल अनएम्प्लॉयड दैट इज यूथ कैटेगरीज ट्राइजिम प्रोग्राम राम कीपिंग इन व्यू ट्राइजिम लॉन्च ड्यूरिंग 1979 ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जोटा कहते ट्राइजिम शॉर्ट फॉर्म रे 1979 रे प्रोग्राम टी लॉन्च करथला हम देश रे TRYACM एत सब लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी था ट्राइजिम प्रोग्राम इत्यादि सो ट्राइजिम प्रोग्राम रे ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आदर सब स्ट्रेटजी कोन थिला
द youth identified for the program युवक मानक आधार सब आइडेंटिफाई करा जाउतला to be put through a period of a training either in a training institution or under a master craftsman जो गाँ गंडा अंचल ट्राइजिम स्कीम रे यंग जार जो भलिया क्वालिफिकेशन अछि जो को माने आईटीआई ट्रेनिंग नै छंती को माने जनरल एजुकेशन पाई छंती को माने नर्सिंग पाई छंती सेमानक सब ए ट्राइजिम स्कीम रे सब अंतर्भुक्त करा जाउतला सेमानक ट्रेनिंग दिया जाउतला the duration of the training is flexible depending on the types of course upare depend करतला the training trainees are given stipend and a took kit सेमान सब विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग रे किट दिया जाउतला stipend दिया जाउतला on the successful completion of the training they become eligible to receive credit income generating asset under IRDP so एथरे कोन ट्राइजिम रे केवल ट्रेनिंग सब दिया जाउतला जो माने ट्राइजिम रे ट्रेनिंग नै रेडी हेबे सेमान को आईआरडीपी स्कीम रे सब विभिन्न प्रकार क्रेडिट एवं क्रेडिट सेमान सब बैंक जरिया रे दिया जाउतला नाबाडा थ्रू डीआरडी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबाडा माध्यम रे डीआरडी थ्रू रे ब्लॉक मान को सब दिया जाउतला जो माने ट्रेनिंग रे अचीवमेंट करूतले ट्रेनिंग नउतले सेमान सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीशन पर सेमान को लोन स्कीम बा क्रेडिट सरकार दउतले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वावलंबनशीलता हासिल करिबा पाई विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट निर्माण करिबा पाई प्रोजेक्ट्स वे आर टू बी इंटीग्रेटेड वंस बेनिफिशियरीज वे आर टू बी फॉर्म आईआरडीपी टारगेट ग्रुप at least 50% of the youth we are to be trained for self employment either for secondary or tertiary sector activity द्वितीय क्षेत्र बा टर्शियरी क्षेत्र मानक पई जो एक्टिविटी अछि से मानक पई आदर सब गुरुत्व दिया जाउतला ट्रेनिंग ऑफ ऑल बेनिफिशियरी वाज टू बी फंडेड आउट ऑफ ट्राइजिम फंड्स ट्राइजिम रे जो फंड्स थिला से फंड्स रे माध्यम रे मानक सब दिया जाउतला विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग जो मान ट्रेनिंग नै कि आसुतले आको के ऑर्गेनाइज करथला ताले ब्लॉक video the block development officer video has the responsibility to select karibe the eligible youth belonging to the target groups with the help of a village level workers VLW video को निर्देश रे VLW आइडेंटिफाई करिवो गां गंडा अंचल रे ओ माने ट्रेनिंग नै छथि ट्राइजिम स्कीम रे सेमान को the video invites applicants and scrutinize them the applicants मान को इनवाइट करिवो ता स्क्रूटिनाइज करिकरी तांको ट्राइजिम स्कीम रु विभिन्न प्रकार क्रेडिट फंड्स अलॉटमेंट करा जायता है the identification of vocation is done by the district rural development agency DRD तादरे इन्वॉल्वमेंट हबो DRD in consultation with the district level officer of different departments विभिन्न डिपार्टमेंट अछि कि जे जोथरे ट्रेनिंग नैथिबो ताको सही डिपार्टमेंट ताको फैसिलिटी सब जोगे दिया दिबो एई जो ट्राइजिम स्कीम रे सब तो एई भई सब आधारे सब विभिन्न प्रकार हमर ए ब्लॉकर सब पाठ सब अछि तनो एगडा सब भलो भाबे टिके पढिबो तापर हमर अछि डकरा प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज ताको आजे डकरा प्रोग्राम मध्य ताको समय सब भलो टिके सब पढिबो डकरा प्रोग्राम ट्राइजिम प्रोग्राम आईआरडीपी एरा सब लॉन्ग क्वेश्चन सब आछता है परीक्षा रे हला तापर हमर जेआरवाई जोहार रोजगार योजना पुराना काले सब स्कीम सब एगडा सब हम देश रे सब एगडा सब प्रचलन थिला ए जेआरवाई रे विभिन्न प्रकार स्कीम मध्य अछि इंदिरा आवास योजना अछि मिलियन वेल्स स्कीम अछि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अछि components of ए जो JRY रे जोहार रोजगार योजना माध्यम रे so learners that information come to me only to close the class today एवं आस्था काली मध्य से 6 PM रे सब रेडी हेतिबो ओके थैंक यू टू ऑल Thank you, sir. थैंक यू आसंता काली 6टा बेले रेडी हेकरी सब
लिंक रे जॉइन करिवो आगे पहुंच कि टे रजिस्ट्रेशन आगे कर दबो एटा होची बड़ गुरु दायित्व कारण तम रजिस्ट्रेशन जोडा कहूची सेगडा को रीजनल रेकॉर्ड भुक्त होई कि रहू सर हला ओके थैंक यू टू ऑल नेक्स्ट डे आई विल टेक योर थैंक यू सर थैंक यू